अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो हमारा एक और टॉपिक है कमर्शियल वेजिटेबल फार्मिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस come a bit to the, I will say, conscious phase of life, and we will see what the title speaks. The title is about the commercial vegetable farming. So what is commercial vegetable farming? So why commercial? What is commerce? Right? For example, I am having a kitchen garden and then I am growing the vegetables at home. Can I say that it is the commercial vegetable farm? No. It is for my own family requirements, for the sustenance. यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे ना, यहाँ पे वेजिटेबल कल्टीवेट करते हैं अक्रॉस, बहुत ज़्यादा जो फैमिलीज वगैरह यहाँ पे करते हैं. Then it is a craze for us people to go for the kitchen gardens. Do we sell those vegetables outside? So what then? Why then commercial? But once you are the agriculture technocrats and then after you will complete your studies, what do you people? If somebody will be interested in going for the vegetable production, will take up the vegetable venture, what will he? Will he look at the family needs? He wants to use it as a business opportunity. So that's commercial vegetable. Now, vegetable production actually, it's not having single domain. There are so many domains. And is commercial vegetable production profitable? What are the opportunities and what are the challenges? For example, somebody among you will come and they will say, I want to go for the commercial vegetable production, but sir, what are the challenges in this area? What are the challenges in that area? For example, this area is the organic farming. The other sector may be protected vegetable cultivation. The third may be hybrid. Fourth may be. Fifth may be. Now, this is somewhere. So, one of the important bioresources in the horticulture, that is those are the vegetables. How many vegetables we commonly see in Kashmir? Once it comes to the Kharif season, during the winters, now we have winters. How many vegetables now we are growing during the winters? Do you feel any sort of tomato plant in the field now? Focus bit. Now, are we able to go for the vegetable cultivation like we will go for heavy vegetable cultivation? क्या हम साग लगा सकते हैं इस टाइम? नहीं. ग्रोथ होगी during the severe winters? नहीं. कितने हमारे महीने जाएंगे among the 12 months? November, December, January, February, March. How many months are these? Five. Do you feel? 5 months. It is almost half a year. 50%. That is one of the most important reasons हमारा vegetable जो farmer है, जो vegetable farming के साथ या किसी और भी farming के साथ है, he is only able to earn for how many months? 6-7 months. और उसमें भी पहले बेचारा वो तो करेगा नहीं, because once he will start from March. How much time it will take for him to raise a crop and then so that the crop he will harvest, he will be able to harvest? Simple, 2 months, as simple as anything. And how do you feel the farmer will run his family from November, December, January, February, March, April, May? How many months now? 7 months. Do you feel now the pathetic condition of the farmer, and do you feel that protected cultivation will save the Jammu and Kashmir? Do you feel that this is one of the reasons in the policy matter जो हमने project भी बनाया था promotion of vegetables, exotic vegetables. One of the components was the vertical expansion. High tech में उसमें 250 करोड़ हमने रखे, 250 करोड़ for Jammu and Kashmir only for vegetable cultivation, vegetables. वो उसमें क्या देंगे farmer को देंगे high tech वाला पॉली हाउस, तो उसको बोलेंगे 80% इसमें सब्सिडी आपको मिल जाती है, 20% only you have to give, and then you will see a mushroom growth of the poly houses, high tech greenhouses in the Jammu and Kashmir. And then how do you feel what will be growing inside? 7 months they will be already, so he will come to the tropical level area farmer. So tropics, subtropics में farmer grow करते हैं ना continuously, you go for the vegetable cultivation for rest of the cultivation. This is the reason that we have kept there high tech or protected cultivation as the
fundamental corner in making Jammu and Kashmir self-sufficient production. And how do you feel about a region where for 7 months a farmer is not able to sell anything? No, the farmer will simply quit. He will say for 7 months, what will I do? But if the same farmer is given the protected structure, he will be able to grow vegetables and then he will not quit. What will happen in turn? What will happen? During these either months, we have landslides and then vegetables are nowhere. We do not have, all the imports are cut. We do not have vegetables, fresh vegetables. Do we have? No. So what is the cost of 1 kg of kale during the winter months? 80 rupees, 90 rupees, 100 rupees. What is the normal price of the 1 kg of kale? 30, 40. वही क्या चला जाता है? So what is the opportunity in the problem? Is there anything like that on the protected cultivation? No, nothing like that. So now let me start. One more problem is that. No problem is that. What is the area under vegetable cultivation in the Jammu and Kashmir? What is the area under vegetable cultivation in Kashmir area? What is the production of vegetables in the Jammu and Kashmir? What is the production of vegetables in the Kashmir region? So how much is the population of the Jammu and Kashmir? How much is the population of the Jammu and how much of the Kashmir? Fine? These are important questions. Why actually we are going for the imports? Why we are now going for the imports? Do you feel that our vegetable gardens are stable? Do you feel like that? They are stable or they are being converted to some other? So there was a law regarding that the farming land shall not be used for other purposes, for example construction. But that's happening. That's happening altogether. So how do you feel about after 10 years? What will happen? Shrinking of the land. So we have proposed already, we have to go for horizontal expansion also. That we have to bring in more land area under vegetables. We have to go for expansion. Only then we will be able to feed the population. And second, we have to take care of the 7 months also. So for that we have to go for the vertical expansion. This is the policy matter actually. So present area under vegetable cultivation is 60,000 hectares with a production of, yes, how much? How much? 1,000 tons. What is the dietary requirement? What is the present production provides only 240 grams per capita per kg. Now there is one more problem. So there is a huge gap also of the 60 grams per capita per day. Then this is a huge gap. We calculate this is how to mitigate that, avoid that. There is a need for horizontal and vertical. Now, for example, you have in India 5 canals of the land. You will submit a proposal to the Department of Agriculture. I want 5 canals of land or 10 canals of the land. I want to go for vegetable production in that area. Kindly identify me as one of the beneficiaries under the promotion of vegetables or public exotic vegetable activity people. Now this is done practical, I am telling you, not just sitting. So having land area, you submit an application, that will be online, everything is done, and there is a dashboard for that. And then the Department of Agriculture people will come and then they will identify if the land is suitable for the vegetable cultivation, they will definitely identify. Because there is a program for horizontal expansion. This is an entrepreneurship development program. This is what we are for here. And then what they will give? They will give a lot of subsidies. They will provide you seed of very high quality vegetables, varieties. They will identify the market for you people also. Marketing what I will be feeling later on. And then if they feel no, very good area where we can go for establishment of a high tech orders. Say yes, comfortable. Are you able to have your 20%? Yeah, they will provide 80% subsidy for high tech, for establishment of high tech orders.
They will see some of the things that whether the irrigation water is there. If it is not there, then they will devise some other program. Maybe they will use it for the pulses program under the HADP project. So that actually the land is now to be utilized, and that is to be you people, right? So you will say, for example, I am not now providing. They have not provided me the high-tech polyhouse. Why I shall go for cultivation of vegetables for only 5 months? So what will be your answer? Tell me practical. For the rest of the 7 months, what will be? Will answer me just fine. So what is the first strategy? Bring in more area under vegetable production, vegetable cultivation, and then going for the high tech. But now the population is day by day increasing, land is shrinking, which is actually being used for the farming purpose. What is the answer? The future, which is actually not included in this policy. That will be included in the possibly in the next policy. What I feel. So that will be a multi-story polyhouse, which is known as vertical farming. Fine? Vertical farming will be known. The buildings, it will be huge structures, maybe 25 stories, 50 stories, polyhouse. Now you do not have to worry about that also, because artificial intelligence and the precision agriculture, that's there. पानी चाहिए पौधों को, खुद ही सेंसर बोलता है पानी चाहिए. आप खाली बैठ के लैपटॉप में देखते हैं किस वाले ट्रे में, किस वाले स्टोरी में पानी कम होगा. आप यहाँ से उसको ये करेंगे. You will give the number. It will be second story like 2, and then something like 5 or 50 tray. And irrigation कितना? कितने मिलीमीटर से इसको? कहीं पे disease होगी तो you can automatic detection. Fine. Do you feel now that you have to go for the plowing of the land? How many pathogens are present in the soil? How many are the soil-borne pathogens? Now, I will not say it will be a complete 100% replacement of each and every crop. I am not saying that. One of my good friends, वो मुश्किल कुछ उसने हाँ जी Zoram, very good friend of mine. He is also one of the pillars in this policy framework. Now you people are feeling it that now there are shifts. Now there is a change in this scenario in the vegetable world. Do you feel somewhere that ये वाली गैप जो है ना, ये वाली आपकी अपॉर्चुनिटी. Import कितना हो रहा है vegetable? Do you know? I went to the Department of Agriculture also, where I got the statistics. How much is it? What will happen is that how best we will be able to just go for the zero imports and then to go for the extra. Go for the production of the vegetables extra, so that we are able to send it outside also. So, export policy भी थी. crores के भी वो जो अभी बन रहा है. Last year what happened, यहाँ से carrots, black carrots यहाँ से partners rate which was given to the farmer, it was, if I am correct, if I remember exactly, it was around 60 or 67 rupees per kg. But this was the beginning of the new crop. Fine, development की तरह जा रहा है. जहाँ black carrots आपके temperate areas से बहुत जबरदस्त मार्केट होगा. And और अगर आपके पास कहीं पे लैंड होगा, आप नहीं चाहेंगे कि आपका मार्केट ऑलरेडी यहाँ ब्लैक कैरेट लगा उसमें, बात को खत्म करने देगी. Like anything. So that's a question. Productivity at the farmers field बहुत कम होती है, but with the help of technologies आप इसकी productivity increase. That's already जहाँ पे में काम कर रहा है. The area which is already under vegetable cultivation, that is producing less than its capacity. So with the help of technologies, the farmer will be able to. सर मुझे टेक्नोलॉजी का नाम बोलो तेजी से क्या होगा. अब लेट हैंड रीडिंग करते हैं, फार्मर को कितना लेबर जाएगा, बहुत जाता है. एंड नाउ व्हाट आर द रेट्स ऑफ द लेबर्स पर डे? 700, and then the availability is again a problem. So the cost of vegetables जो फिर को बनाता है, that was very high. एक वीडर ला बात खत्म और बोलेंगे उसका कॉस्ट ज्यादा है. कम्युनिटी सेंटर नहीं,
और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑलरेडी HLDP प्रोजेक्ट्स में वो कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करके वो देंगे 10-10 फैमिलीज या 20 फैमिलीज को उतना ही चाहिए, एक दिन एक लेगा, दूसरे दिन लेगा, फ्यूल थोड़ा सा डालो। फॉर दैट रीजन वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट्स इन आवर यूनिवर्सिटीज आल्सो सोलर पे बना रहे हैं। आज भी एक आया था पेपर पे कटिंग, वो ब्रश कटर उसने बनाया था सोलर पावर। फ्यूल कॉस्ट इज आल्सो लेस नाउ, होगा ही नहीं उसके फाइन। एक दूसरी टेक्नोलॉजी का नाम बोलो, ये पोटैटो निकालने हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू द मोस्ट प्रैक्टिकल पॉइंट्स। पोटैटो हार्वेस्टर लाओ, पोटैटो हार्वेस्टर लाओ, आपका इतना पैसा बच जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे। नाउ आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, क्योंकि हमने जब लगाया तो पोटैटो हार्वेस्टर और जब हम मैन्युअली वो हार्वेस्ट करते थे, यूज्ड टू बी वेरी ह्यूज। वो जो मतलब 15 डेज 20 डेज में काम हमारा होता था ना, but used to take at least 15 to 20 days for harvesting of the potato जो हमारे पास एरिया था। Now we do it in half a day, in 1 day। आपको इरिगेशन देनी है, क्या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, आपको सोइंग करनी है, क्या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। यस, आपको पहले सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है वो सीड है। सीड इज द कैप्सूल ऑफ द टेक्नोलॉजी। इट इज द कैप्सूल ऑफ द टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द कैप्सूल? कैप्सूल में हर कोई विटामिन होता है ना, विटामिन A, B, C, like that, etc. That means that seed is having genetic code. If it is a good variety seed, then genes जो अंदर से है ना, अगर ये robust होगा, it's a very good variety, so it will be able to grow robust. If it's a drought resistant, for example, vegetable में तो वैसे very difficult to go for development of a drought resistant drought. हाँ, water scarce थोड़ा होगा, तो अगर ये water scarcity बर्दाश्त करती है, with a little amount of water इसकी ग्रोथ अच्छी ग्रोथ होगी। जितनी इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी होगी, वाटर यूज एफिशिएंसी होगी, तो उतना ये ज्यादा यील्ड भी अल्टीमेटली, the yield will be so high. So important is that seed also. That is one of the reasons of the HLDP में जो first project था वो seed है, because seed is the foundation of the agriculture. सीड नहीं होगा, हर कोई चीज आपके पास होगी, फर्टिलाइजर भी होगा। आर वी एबल टू प्रोड्यूस इन क्रॉप? नो। इवन दो अगर हमारे पास फर्टिलाइजर नहीं भी हो, बट सीड होगा, कुछ ना कुछ तो यील्ड आएगा। यू कैन थिंक दैट सीड इज एक्चुअली द अल्टीमेट टेक्नोलॉजी। सो यू शुड हैव द बेस्ट क्वालिटी प्लांट मटेरियल प्रोवाइडेड टू द फार्मर। दैट इज द रीजन मैंने बोला अभी फॉर एग्जांपल आप पोटैटो सीड प्रोड्यूसर बन जाएंगे। आपको अब आ रही है ना समझ, पोटैटो सीड प्रोड्यूसर कितना अच्छा है बनना, या किसी भी शोबे में आप जाएंगे तो वहां सीड प्रोडक्शन का, तो दिस इज इन जस्ट जो एक डेफिसिट आपको दिखाता है। जो 2022 लास्ट ईयर था, वेजिटेबल रिक्वायरमेंट कितनी थी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कितने थे, फाइनल वेजिटेबल रिक्वायरमेंट कितनी थी, एरिया अंडर वेजिटेबल क्रॉप कितना था, प्रोडक्टिविटी कितनी, वेजिटेबल प्रोडक्शन के में कितनी है, एंड डेफिसिट कितना था, 8.26। Now this figure also, अब इस पे अगर जाऊंगा तो you will be surprised, because this figure will get a sort of inflation. I will discuss. Can anybody just think about why this figure will get bigger? Value increasing crores. This will also get inflation. Only one point. No questions मैंने भी and then in 2027, what will be the population? What will be the scenario? Right? What will be the scenario on the project? There will be an excess of 38,000 tons. कैसे? क्योंकि हम यहाँ से प्रोडक्टिविटी लेवल्स एनहांस करते हैं। हम 2.5 प्रोडक्टिविटी लेवल्स आता है। Fine. As well as we are also increasing the area under vegetables. Increasing the area under vegetables. Going further. This was a policy by which we have a dream of having excess of 8.7. But then this policy should get a real chance of being applied in the field. Then only can we able to realize this. And what will be the
एक्सपोर्ट को जो जितना होगा व्हाट विल बी द वर्थ वैल्यू फाइन. Why I was showing you the previous slide? This is an opportunity. Why I was showing this previous slide? Because this is a constraint, challenge. So practical है ना field में, and then this is not कोई student आते हैं, अब department of agriculture already है, that's in practice. Otherwise there is no fun of you. मेरा पॉली हाउस ही लेंगे, एक कनाल पे, दो कनाल पे, हाई टेक पॉली हाउस. Government is providing the subsidy. Why you not go for that? Then you can also take up another opportunity, जिसमें आप थोड़ा सा एरिया हाई वैल्यू एक्सोटिक वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए. But your tourism industry, ठीक है, 100 years before tourism था, लेकिन ये वाली choices इतने नहीं थे. तो वहीं से पता है स्प्राउटिंग ब्रोकोली भी आता है. You have lettuce, you have celery, you have parsley, you have so many things. You have Chinese cabbage. जो हमारा टेस्ट है वो भी चेंज होता जा रहा है. फाइन. अब इस एक्सोटिक वेजिटेबल में क्या प्लस है? वेरी हाई रेट्स, अच्छे दाम पे. ओनली रिक्वायरमेंट है इसकी क्वालिटी अच्छी है. क्यों नहीं स्प्राउटेड ब्रोकोली आपकी 5.5 होगी, वो रेडी पे होगा एंड देन वो सड़ रही होगी. Nobody will be able to take that. That's also one of the reasons कि उसमें HAPP में among 29 projects, one of the projects deals with the post harvest valuation, post harvest, कैसे आप उसको क्वालिटी मेंटेन करेंगे so that you are people are able to. ठीक है, थोड़ी सी रैपिंग करेंगे ना, थोड़ी सी रैपिंग, इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए. रैपिंग की एंड देन यू नो कि ये कंटामिनेटेड नहीं है. अदरवाइज वो रेडी वाला सिस्टम पीपल हैव टू फॉरगेट इट. Will take the vegetables in the hand cart and then you will be thinking that I will gain it. Fine, I will be able to earn few. No, vegetables are very tender. Damage होता है. मॉर्निंग में आप लीफी वेजिटेबल ले लो, शाम को दे दो, वेजिटेबल वेंडर्स के पास दो. What is the condition of the vegetables after 10 hours? खत्म होती हैं, देता ही नहीं है कोई. तो आप देखो स्पिनिच बिल्डिंग होती है. Then कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स ऐसे जैसे पोटैटो जिनकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, अनियन है, पीस थोड़ा सा फिर भी रहते हैं. बट देन देयर आर समथिंग गार्लिक रहता है, टोमेटोज भी कुछ दिन रहेंगे एंड देन फाइन. And high value vegetable cultivation in Kashmir region has the capacity to transport into an export oriented venture in bringing dividends. Even if we are not exporting it, the first thing is that we will be able to target the tourism industry. Tourists हैं इतने यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स वगैरह जो भी हैं, टूरिस्ट आते हैं नेचुरली, उनका तो वो है. And then you have broccoli, Brussels sprouts, asparagus, lettuce, red cabbage, Chinese cabbage, so on and so forth. And then what is so important, unique production season of Kashmir Valley makes it more advantageous for farmers. क्यों? क्योंकि तब जो ये फॉर एग्जांपल हमारा जो समर है ना, जो हमारा समर है, अब बाहर इतनी गर्मी होती है, तो हमारे पास एक we will say that heaven for vegetable cultivation or the cultivation of other crops also. We are having a heaven. Especially I will be talking of the vegetables. High altitudes पे जाओ तो during summers you will be able to cultivate. Winter season जो हम plains of the Kashmir में grow करते हैं, देखें अभी आपको पता है जून जुलाई अगस्त आप ब्लैक कैरेट्स देखते हैं या फिर नहीं. यूजुअली हम पी भी कल्टीवेट तो कर सकते हैं लेकिन उनका साइज बहुत कम होगा. बट व्हाट अगर हम ये वाली वेजिटेबल्स हाई ऑल्टीट्यूड्स पे लेंगे, हिली एरियाज में लेंगे, यू आर एबल टू कल्टीवेट द विंटर सीजन वेजिटेबल क्रॉप ड्यूरिंग समर्स इन द हिल्स ऑफ द कश्मीर. दैट्स नोन एज ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन. अब तब देखो एक्सपोर्ट करो ब्लैक कैरेट को तब. So we are having actually a huge, I can say, I'm repeating, huge potential. We have never been able to recognize. We have never ever in our life been able to at least think and then practically walk into that field, do some sort of research, do some sort of practice, and then take up this as a vegetable, as an entrepreneurship development program. Already आपके पास सब हर कोई चीज है. That's the reason this program is also being conducted so that people are able to go for reaping the dividends, reaping the interest जो आपके अपनी हैं, and then HADP programs का फायदा उठाएं. ठीक है.
अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स, ये भी एक है जहां ये मैं एक ही स्लाइड में आपको बाद में बोलूंगा। पॉलिहाउस टेक्नोलॉजी का तो मैंने बोला। इसमें एक पॉइंट है अलो ईयर राउंड कल्टीवेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय 25%। हाउ? नहीं, हम बोलते हैं ऑलरेडी 12 टोमेटो लगाएंगे, पॉलीहाउस में भी लगाएंगे। How? What is the actually yield advantage? Same varieties. You will grow the same variety of the tomato outside. You will grow the same variety of tomato on the inside. पहले सुनो ना, इनकी वर्टिकल ग्रोथ होती है। टोमेटो इज एन इंडिपेंडेंट वैरायटी, हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप में माना जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप देखते हो ना वो टोमेटो यहाँ तक रहते हैं, वहाँ उनकी हाइट बहुत ज्यादा ऊपर तक चली जाती है, and the yield potential is so good also. You have plus carbon dioxide levels inside the polyhouse are high, so photosynthesis will also be high. You have an advantage. You have an advantage. और भी बहुत एडवांटेज है, अभी हम जस्ट ये वाला एंड कंजर्वेशन ऑफ इरिगेशन वाटर का 25 to 50%। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा, पाइप्स लगा है, और ज्यादा होगा अगर आप एआई टेक्नोलॉजी इसमें यूज करेंगे, सेंसर्स वगैरह। सो ये तो ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन जो मैं बोल रहा था। सो दिस इज एक्चुअली द कैंडिडेट्स फ्रॉम दीज एरियाज will be able to go for off season vegetable cultivation in these crops. Simple, as simple as that. तो ये वाला आप देखेंगे, and then revival of niche crops in Jammu and Kashmir. So it will be looking very odd for you people to listen about the word niche. So once this is another project, revival of the niche crops in Jammu and Kashmir. इसमें मैंने 2 क्रॉप्स वहाँ पे प्रपोज किए थे। वन इज द कश्मीरी जो लाल मिर्च है ना हमारा, सेकंड इज द गार्लिक और जुम्मू। तो वी हैव मोर प्लान है और भी कुछ है हमारे अलग से क्रॉप्स हैं, बट दीस आर द 2 व्हिच वी हैव टारगेटेड among the 12 crops. If I am correct, they were the 12 crops that were put in the project, and then 2 from the vegetables we proposed from the division was division of vegetable science जो हमने प्रपोज किए थे, वो 2 क्रॉप्स थे। तो कश्मीरी चिली था, कश्मीरी लाल मिर्च, एंड देन उनका जुम्मू में वो होता है। तो अभी हम यहाँ की गार्लिक की बात नहीं करेंगे, मैं ज़्यादा कश्मीरी चिली पे बात करूँगा। अगर मैं उस पर बैठा एटलीस्ट 1 day, बट देन इट विल बी सो इंटरेस्टिंग। कश्मीरी चिली का सबसे बढ़िया सॉरी, एंड देन मार्केटिंग फैसिलिटी जो है कितनी होनी चाहिए, मतलब ये तो आपके लिए होना चाहिए ना, इफ यू वांट टू गो फॉर। और ये वाला मार्केटिंग का प्रोजेक्ट अलग से, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसमें अलग प्रोजेक्ट हैं, उसमें अलग प्रोजेक्ट हैं, सीड का अलग प्रोजेक्ट है, पोस्ट हार्वेस्ट में अलग प्रोजेक्ट हैं, अच्छा मार्केटिंग का अलग प्रोजेक्ट है, मशीनरी वालों का अलग प्रोजेक्ट है। सो दैट यू पीपल विल कम टू नो, अगर हम यहाँ आए हैं, यहाँ से हम एंटरप्रेन्योर्स, हमारे पास लैंड है, हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जाएं, वो आपको डिफरेंट स्कीम्स में कोई आपको ट्रैक्टर देगा, कम्युनिटी सेंटर बेसिस या हायरिंग को एक कम्युनिटी के लिए रखेंगे, वहाँ कस्टम हायरिंग सेंटर्स होंगे, वो आपको देके आपको पहचाएंगे मुझे ट्रैक्टर चाहिए, या 2 दिन पहले 1 दिन पहले आपके फील्ड में पहुंच जाएगा। सबसे पहले आपके पास अवेलेबल नहीं था, फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे वो तो प्राइवेट वाला भी मुझे देता है, वो आपको 1500 लेगा, वो वाले 500 नहीं। अच्छा सीड आपको इंप्रूव क्वालिटी का सीड वाले प्रोजेक्ट से मिलेगा, इरिगेशन वाला आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देगा। दिस इज ऑल प्रैक्टिकल, थ्योरी तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, it's all practical happening this time currently in the Department of Agriculture. This is so important. This is what for actually these MSME programs have been organized by the government of India. And reduction of post harvest losses and the organic farming is then the another sector, and then इसके लिए भी अलग से है। So one point, export policy यहाँ के लिए बनी है। अच्छा ट्रेड जो इंडिया से होता है, इंपोर्ट, एक्सिस्टिंग इंपोर्ट, पोटेंशियल इंपोर्ट, अब यहाँ की बात है हॉटस्पॉट्स ऑफ वेजिटेबल एक्सपोर्ट प्रपोजल फॉर JNK जो यहाँ से हमने प्रपोज किए थे, श्रीनगर, बड़गांव, अनंतनाग, सुपास्टिक से जो हमने प्रपोज किए थे, ये वाले वो वाले इलाके हैं जहाँ से हॉटस्पॉट्स ऑफ वेजिटेबल, यहाँ इन फार्मर्स को आइडेंटिफाई करना है, वो एक्सपोर्ट के लिए आपको ऑलरेडी होगा। टारगेट डेस्टिनेशंस वो आपको पता है, फ्रेश वेजिटेबल बांग्लादेश,
नेपाल, नीदरलैंड्स, मलेशिया, श्रीलंका, यूके, ओमान, प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स के लिए ये। अब आपकी बात ये बोलते हैं मुझे प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स में आई विल गो फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स एंड देन शी इज सेलेक्टिंग यूएसए। I will send my product to the US. For example, you will say, sir, what I will do, I will produce a fresh vegetable and I am targeting Netherlands, for example. So, हमारे पास niche crop है, ऑफ सीजन भी है, GI टैग के लिए अप्लाई किया है, GI टैग का अलग से बेनिफिट होता है। तो जनरल कंस्ट्रेंट्स जो वेजिटेबल एक्सपोर्ट के लिए हैं वो छोड़िए, अभी मैं आपको पहले बोलूँगा इंटरवेंशंस क्या रिक्वायर्ड है। अब ये वाला Brussels sprouts, for example, one candidate has chosen, मेरे पास 2 कनाल है या 10 कनाल है या 20 कनाल है, I will go for broccoli and I will send it to the United UAE. इसका मतलब इसको डार्क ग्रीन कलर होना चाहिए, ऑलरेडी इसको पहले ही पता है। What is actually the taste and the preference of the people in the UAE? That is dark green color. Website ये है नेपाल एंड सिंगापुर, फर्म स्टॉक्स एंड कॉम्पैक्ट बट क्लस्टर्स 10 सेंटीमीटर। ये वाले आपके रिक्वायरमेंट होंगे, यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द दिस एक्सपोर्ट, अदरवाइज नॉट। ये वाली है ना, नाउ व्हाट यू विल डू, you will select a variety which is having these features, you will do your intercultural operations depending on the keeping in view. Now you have actually already आंसर तो आपके पास पहले ही है, अब आप इसको बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि लोग मुझे ऐसा कोर्स चाहिए, वो अब आपको बोलते हैं यार यूएई वाले बोलते हैं मुझे ऐसे वेजिटेबल चाहिए। नाउ कम इन दिस फील्ड, दे दो मुझे बना के, वो एक्सपोर्ट करेंगे, हाथ के हाथ बिक जाएगा। We do not have to worry. We do not have to go now selling all the vegetables in the hand parts in the regular. Fine. Carrot ये वाले चाहिए, अगर ये वाले हैं तो ये these are the actually specifications. Radish, target destinations, specifications. Carrot, this. Tomato, capsicum and rest of the vegetables कितने हैं? Now I will just, for your good convenience, I will say this is actually my deal interest also. This has been my dream project also, to go for hybrid seed production in Jammu and Kashmir and make it a very good export hub. So what are the opportunities? This is also one of the opportunities. Now what is the constraint? We do not have the indigenous vegetable hybrids. Okay, what is it? This is the Mexico Teja 4 MHCP 310 chili seed. Fine, चिली का सीड है, वैरायटी आपके सामने है। So 10 ग्राम का कितना कॉस्ट है? 407 kg. Fine, सिंजेंटा का है, देखिए what is the cost? हाँ कितना? अभी और this is actually what for the program is now. So if you are having 10 grams, 473. If you will have 100 grams, it will be 4,730. If now you are having 1 kg, that is 1000 grams. What will be the cost? जरा मल्टीप्लाई करो ना, प्रैक्टिकल करो ना। 473 into 100, ये 10 ग्राम का इतना कॉस्ट है। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर एक हाइब्रिड सीड लाया था, 1 kg उसका था 2,30,000 1 kg। ये मैं जस्ट नॉर्मल दिखा रहा हूँ, तेज एवरेशन कितना, हाउ मच? 2,30,000। इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप बनाएंगे 1 kg सीड, आप कितने में बेचेंगे? 1 kg सीड 2,30,000। अगर आप 10 kg सीड बनाएंगे, हाउ मच? 20,30,000 means more than equivalent to the salary of 2 gazetted officers. More than that. 10 kg है सीड बनाना है, वो भी एक चाहिए। अगर आप ये वाला नॉर्मल वाला ना ये बनाएंगे
So it is 1 kg 47,030. अगर इसका आप 10 kg बनाएंगे it will be around 4 lakh, है ना? ये नॉर्मल है, उतना ज्यादा नहीं है. अगर आप अब इसमें 1 क्विंटल सीड बनाएंगे, how much? 47 lakh. जिनका सब गैजेट ऑफिसर है ना, वो कितनी गैजेट जीएस की सैलरी की पकड़. Is this the best opportunity for? Now you people have been able to understand how much is the potential. Seed production is one of the wonderful areas, and especially the seed of Jammu and Kashmir, that's preferred. Why? Well, less of diseases. The temperature is so good. Hot यानी टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता है, डिजीज उतनी आएंगी. जो फिर फंजीसाइड स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, उसमें तो सीड की मैच्योरेशन डेवलपमेंट में भी असर आता है ना. और डिजीज जब वो वाले ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा होगी, नेचुरली वो पैथोजेंस सीड में भी एंट्री मारेंगे. सीड ट्रीटमेंट आपको देना ही देना है, एंड देन यू नो कि इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है सीड में डिजीजेस होने की रादर देन ह्यूमन टिश्यू. टोमेटो का बताएंगे, सेम स्टोरी विल बी देयर. ठीक है. These are 10 Indian top seed producing agencies. Cereals में, vegetables में कौन है? Century Seeds, INAYAT, Vienna, Singro, Syngenta, Macro, Namdali Seed. This will be the advantage and one. अच्छा मुझे एक चीज बोलिए, इसमें जो ये फॉर एग्जांपल 10 फर्म्स हैं, आप एक ऐसी फर्म नहीं बना सकते, एक कंपनी आप नहीं बना सकते. तो फार्मर्स को हम लेके फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं बनाएंगे, बन रही है. कुफार में भी प्रोग्राम चल रहा है, वो एफपीओ पहले जो होता था और वो एफपीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट वो कंपनी रजिस्टर होगी. देखिए अभी क्या होता था, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव्स वगैरह इंसेंटिवाइज कर रही थी. देन दे यूज्ड टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स. फॉर एग्जांपल वेजिटेबल को कौन लेता था, अब वो एफपीओ के थ्रू मार्केट आइडेंटिफाई करते थे. बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम. अब मैं बोलूंगा, बट वंस इट विल बिकम अ कंपनी, उनके पास बहुत मतलब एक्सपोर्ट पहले पोटेंशियल आता है. विद द एफपीसी यू हैव वन मोर एडवांटेज के एक्सपोर्ट में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं. ये तो मैं बोलूंगा नहीं, these are not this बस one सिंपल. फॉर एग्जांपल टोमेटो में हाइब्रिड बनाना है, ये वाला ये वाला पार्ट you people can be are able to identify what is it. This is the tomato flower, sepals, petals, androecium, and then this is in the form of comb. तो इसको उठाना है, मैस्कुलेट करना है. ये nth मतलब मेल पार्ट होता है. ठीक है, इसको उठाओ एंड देन इनसाइड स्टिग्मा होगा. जो एक फ्लावर को फॉर एग्जांपल आपने मैस्कुलेट किए, जो एक छोटे होंगे वो हम काटेंगे, मतलब एक बंच में एक या दो फ्लावर खाली रखेंगे, बाकी को हम काटेंगे, क्योंकि एक बंच में खाली एक या दो फ्रूट्स हम हाइब्रिड बनाएंगे. उसके बाद जब मैस्कुलेशन की तो स्टिग्मा यहाँ से है, फिर वहां से पोलन लिया और स्टिग्मा को खाली टच करना है. यू पीपल विल बी नोइंग, टच करना है एंड देन जो फ्रूट बनेगा उसको कॉटन ऊपर से रखो, फ्रूट बनेगा वो हाइब्रिड फ्रूट है. इसमें पैरेंटल लाइंस होती है, वो क्या होता है, इतना इजी. दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट, है ना, प्रैक्टिकल पार्ट. बाद में हम मेल स्टेरिलिटी का वो कांसेप्ट बोलेंगे. अभी तो मैंने जस्ट ये दिखाना चाहता था बिकॉज़ दिस इज वेरी गुड प्रैक्टिकल पार्ट दैट यूज टू बी. चिली में भी इजी करेंगे, सेम टू सेम. इतना करना है, मैस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन, हाइब्रिड बन जाएगा. बोटल गॉर्ड में कर सकते हैं, स्पॉन्ज गॉर्ड में कर सकते हैं. This is one of the hybrids that has been developed by me. मतलब ये जो था मेरा पीएचडी प्रोग्राम था, ये यूनिवर्सिटी लेवल होता है, तो उसमें ये वाला हाइब्रिड है. Any question? कोई क्वेश्चन तो होगा ना? कुछ नहीं. सवाल है तो